पहाड़ है, ये जो है वाटर ट्रिब्यूटरी है। यहाँ में लुपू नदी जो है, ये बीआईपी कॉलोनी ईटानगर को दिया जाता है, पानी लेता है। पोर्ट नदी से बीआईपी कॉलोनी जाता है, इंक्लूडिंग गवर्नर, चीफ मिनिस्टर हाउस। देन आपका ये जो मुगली, दोगोसो, चेमी, बुद्धीवदा, और उसका बाद रिलो नदी, देन रिलो और मेष, ये पोमा नदी का ट्रिब्यूटरी है। मेष नदी से ही हम लोग ईटानगर का सेकेंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उधर से हम लोग पानी लेता है। और अगर ये पहाड़ को डिस्ट्रैक्शन करता है तो ये पानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और उसका बाद कैचमेंट एरिया सिवियरली इफेक्टेड होगा और हम लोग आने पीढ़ी के लिए बहुत सा तकलीफ होगा। और हम लोग डेवलपमेंट भी ऐसा डेवलपमेंट करना है कि सस्टेनेबल सस्टेनेबल फॉरेस्ट का साथ मिंगल करके इकोलॉजी को सेव करना है। तो हमारा ये बस्ती लोग ये चाहता है कि ये जो इलाका को पूरा कम्प्लीटली फ्लोरा एंड फौना को, वेजिटेशन को एज इट इज रहने देना है, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी रिसेंटली हम सुनने नहीं कंफर्म है, ये जो गेमागेका, उसका बाद बेचा, गेमागेका, बुधपुतु और डेमा, ये जो सेंचुरी ओल्ड फॉरेस्ट है, उधर में आप पुंग का चिड़िया मिलेगा, पुदुर मिलेगा, आपका हाथी लोग उस साइड में ही चला गया। ये एक बहुत सा ऑर्गेनिक, एक्वेटिक एंड